settings. हेलो मोनीश, वेलकम टू स्ट्रीम। अभी थोड़ा सा स्ट्रीम की सेटिंग करने में ध्यान नहीं दे पाया, तो लेट आंसर हो गया मेरा। और क्या है? Okay.
अरे चैट सॉरी ध्यान नहीं दे पाया। कैट वाइविंग टू लेवन पोल का सुनो। लेवन पोल का तो मैं सुनता हूँ। मस्त है, नो कॉपीराइट। हाउ कैन आई पार्टिसिपेट इन द गिव अवे? आई अपडेटेड दैट इन डिस्क्रिप्शन, वेट गिव मी अ सेक। ओके ओके, pretty easy steps. फिर रखा गिव अवे? हाँ इसमें रखा है, गेंशिन में रखा है। आप रिफ्रेश कर लो, अब आपको दिख जाएगा पूरा, उसमें डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल दी हुई है। स्ट्रीम टाइटल ही गिव अवे रखा करो। अच्छा ऊपर गिव अवे पहले लिख दूँ? ठीक है चलो गिव अवे लिख देंगे अगले वाले में। आज का 1.1 का अपडेट मैंने सुना बड़ा कातिल अपडेट आया है। एक के करो, एक के होने तो दे। बीस्ट गेमिंग आप जाके चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखना चाहो तो मुझे टाइम लग गया थोड़ा उसको ऐड करने में। मोबाइल का हील होता है यार, देखते देखते हालत ख़राब हो जाती है। मैं पीसी से कर देता हूँ ये चीज़, जल्दी जल्दी टाइप हो जाते हैं। ग्राफिक थोड़ा एनहेंस किया है, अब पिक्सलेट हो रहे हैं। टैग्स भी डाला करो, गिवअवे का तो टैग डाल दिया अपन ने। और अभी अपन में ग्राफिक्स थोड़े इम्प्रूव करेंगे तब नहीं वाट लग जाएगी। पीसी का फीचर जिसमें मैप छोटा करा है। ओके अपना ये थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने अनलॉक के लिए। टैग्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट एट द स्टार्ट। सबका नसीब अच्छा नहीं होता कि अपने आप वीडियो वायरल हो जाए। ये सही है, एकदम सही बात। अभी एक आएगी बड़ी वीडियो, टेंशन नहीं है। अब भाई उसमें लगा तो आऊँ। अरे इसका ही वीडियो बना रहे थे, डिस्कॉर्ड से रिकॉर्डिंग करने में प्रॉब्लम होती है, वीडियो बस हमारी कोई वायरल नहीं गई। ये क्रिटिक आके बस वही है, उसमें पॉपुलैरिटी नहीं बची, गई तो है वही। वही एक मेरा प्राइड है। मेरी 104 की लाइफ जा रही है। लेवल बढ़ा है, हमारी वाट लग रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 7 लाइफ जाया करती थी 6 के, 8 के है उस पर। तो गड़बड़ लग रहा है मेरे को। वर्ल्ड लेवल में लोग फाड़ रहे हैं, इतना ज़्यादा डैमेज कैसे लड़ेंगे रे बाप अपन बॉस से। एक तो हीलर भी अपने पे एक ही है। कोई ना, चाइल्ड का चैप्टर आया तो अपन खेलते हैं। न्यू स्टार अप्रोचेस, फ्लोटिंग पैलेस पे जाना है। यहाँ नहीं जाना मुझे, टास्क पे जाना है। फ्लोटिंग पैलेस ही दिखा रहा है। मिनिस्ट्री मिशन ये क्या है? तो स्टार्टिंग में थोड़ा इंटेलेक्चुअल क्लिकवेड स्कैम करना चाहिए था। अरे यार तो वही तो अपन नहीं करते, स्कैम नहीं करते अपन। कुछ उसूल होते उसको लाइफ टाइम फॉलो करना चाहिए ताकि सी लोग को समझ ना आए और गलत भी ना लगे। ये आज तूने सही लिखा है, मैं यही बोलता हूँ, वर्क स्मार्ट इन सब चीज़ों में। जैसे कितना पैदल जाना है? 3000 मीटर। इतना पैदल क्यों जाए हम?
Hi bro, today I got official. Yo, congrats bro. Welcome to stream बापू पी एंड वेन इट। क्या बात है, एक हीलर भी आ गया। चलो पायरो का अपना गिव अवे स्टार्ट हो चुका है। 17 तारीख लास्ट है सबमिट के लिए। 18 को अपन रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। ओह मैं लिखना भूल गया, 17 लास्ट डेट है भाई। जो भी स्ट्रीम पे आ रहा है एक लाइक मारते जाओ ब्रो। वी नीड योर सपोर्ट। प्यार तो आप दे ही नहीं रहे। हमारे जो भाई बंधु थोड़े बहुत वही देते। व्हाट टू डू डिस्क्रिप्शन में पूरा देख लो ब्रो। डीलुक और क्ली मिलेगा अकाउंट, और उसमें अपना 5 स्टार का वो भी है, वेपन भी है। मैंने वो चीज़ नहीं डाली है उसमें, 5 स्टार वेपन भी है। कहाँ वो टिड्डा का है। टिड्डू ओ भैंस की टांग भाई, क्या लाइव उतार रहे हैं ये लोग। अबे इतनी कितनी डिफिकल्टी बढ़ा दी है भाई। मेरे क्यों वाइट लग रही है यहाँ पे। जा रही है, मजाक चल रहा है भाई। मुझे मेरा फायर इतना डैमेज दे रहा है भाई। तो एक मिनट मार दो जरा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कितना डैमेज आ रहा है। मार मेरे को भाई। 812 भाई, क्या डैमेज है। लाइफ बचेगी नहीं इसमें तो। घंटा हो रहा है इन्होंने क्या कर दिया अपडेट में। एनिमी के अटैक बढ़ाने चाहिए थे, ये तो हम ही डैमेज खा रहे हैं। मेरे अटैक को उतना डैमेज नहीं आ रहा, पर इनका बहुत डैमेज आ रहा है। तो पुंगी बजा देगा। मुझे वैसे ही डिफिकल्टी पड़ रही थी, इन्हें तो मेरी जान निकाल दी इस अपडेट में। एक हीलर से क्या उखाड़ लेंगे अपन। ट्राई मारेंगे। 1 मिनट, जेट स्टोन ही चाहिए। What to do, what not to do. भाई वर्ल्ड लेवल को ज़्यादा ही टच कर रही है, 80 में टच कर रही है। तेल निकाल दिया भाई इनने पूरी तरीके से, निचोड़ के हुए वाट लग जाएगी इसमें। Ready, steady, go! Let's dance!
इतना हाई डिफिकल्टी लेवल, पता नहीं क्या कर रहे हैं। लाइफ की तो कोई इज्जत ही नहीं है, वैसे जा रही है लाइफ। तो मेरा वर्ल्ड लेवल वैसे ही मेरे से हिसाब से बहुत टफ था, अब तो मेरे तेल निकल जाएगा ट्रायल को मारने में ही। ये क्या हुआ? Look up there! That's the jade chamber! सही बात, ऊपर कैसे जाएंगे? This is bad. Paimon's supposed to be your guide, but Paimon doesn't know where the way up to the jade chamber is. सही बात है। Well, since we want to go to the jade chamber, heading to its location on the map is the sensible thing to do. सही Let's बात look है। around. There has to be a way up there nearby. और रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं हो पाएगा। ओहो, ऐसा देखा नहीं की तो जरूरत पड़ेगी। Hey, look! There's some sort of mechanism thingy. Since this is the right place, it must have something to do with the jade chamber. Yes, this must be the way. इस पर ट्रैप पे दबाने की इच्छा थी मेरी। सिर्फ एक है हमारे पास। एलिमेंट के नाम पे तो अपने पे फायर ही है 4 बस, और एनर्जी 3 हो गए, वाटर 3 हो गए, बाकी तो 2 है ही नहीं। उनकी इच्छा भी नहीं हुई। Just what will we come across this time? एक नया चेस्ट आया साथ में। चेस्ट तो खोल लेने दो। It only takes us up to here. Aw, if that wind current was stronger, we'd be able to reach the top in one go. Huh? Why? Or... Oh, Paimon gets it! If it was a secret, Ganyu wouldn't have let us try to find it ourselves, right? Alright, let's follow your plan. Then we can... Oh, hang on a moment. Look down there. Looks like we've gotten close to the Guizhong Ballista. Paimon has a new idea. पाइमन के पास तो बहुत आइडिया। Why don't we shoot you up to the jade chamber using the ballista? No. Paimon may have just forgotten to think about the safety measures. Oh, that's right. Now that you mention it, we could use the Guizhong Ballista to see if there's another way up nearby. Okay, पर पहले मुझे चेस्ट चाहिए। I need primogems very badly। भाई कैसा चेस्ट दिया, खाली सिर्फ 2 primogems। 200 भी देते मेरे को, कुछ अच्छा भी लगता। इससे लड़के देखें, मौत तो पक्की है वैसे। Like a king, never Alex, the mad and the best. You're toast! Kuba, get them! Hello, Fredo Line. Get back! I'll protect us! Kuba, get them! क्या तो मेरी लाइफ जा रही है, ऐसा लग रहा है। Help! Face you! Yeah!
क्या बात है, बड़ा बड़ा हीरो। मेरी वाट लगने वाली है, 100% श्योर अबाउट दैट। ला ला ला। एक बार उसका भी गाना मस्त है, ला 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 था उसका बस यही है। As you wish. Steady as stone. ये तो पुरानी रोड है भैया, गाड़ी तो ली हुई है। ये तो कुछ नहीं मिलना, अपने को नीचे आना है। तेल टूट गया उसमें, बताओ। ये है वो जिसका लाल लाल था है। Oh, I'm looking forward to this. स्कोप का तो पता नहीं है, बड़ी वाली वो देखी थी मैंने। नाइस। और सबसे अच्छी बात है, अब कोप में नहीं खेल सकते। Halt! Who trespasses on these hallowed grounds? Exactly. What are you talking about? We're invited guests. What makes you think you can treat us like this? No. Wait. Maybe this was Ningguang's plan all along. Ningguang पे ला लो, She सही है। pretended to invite us to the Jade Chamber, but set up a millilith ambush here to arrest us. Now Paimon's mad. You, over there. This is a trick, isn't it? How shameless. What? We're just on guard duty. What do you mean, shameless? What nonsense! Seize these suspicious intruders at once! पीटेंगे ये लोग, Well, पीटेंगे। here they come. Line them up and knock them down. पंगा तू ले, भुगतू मैं। खुद लड़ ले। छोटू, ये गलत है। मैं यहाँ भाईचारे के लिए आया, तुम साथ लड़ने लगे। Boba, खूब get ले them. बोला उनको। अरे अगर सीता का कमाल के लेकर तुम तेज बिल्कुल नहीं चलने का, फिर डालेंगे भाई साहब। निकल यार। बड़ा सही सड़का वापस लौट। कहाँ मार दिया रेजर यार, अपन तो आगे। Who goes there? Take the target alive! से लेके आ रहे थे। Cool it! आराम करो। अच्छा बोड़ा है क्या? कभी नहीं तेरे उसको। बोबा नाम है उसका, बोबा। तेरी ऐसी की तैसी मेरे को मारोगे। Let the show begin. चला तो इसको मेरे को चलो। Let the triad! खालो नीचे भेज दी तुम्हारी। भाले में तो अपन भी एक्सपर्ट। Take the target alive! लाइव नहीं पकड़ सकते। मेरा तो मैं पकड़ने दूंगा नहीं। रेजर को थोड़ी लाइफ देनी पड़ेगी। मार लिया हो गया फिर। Ready, steady, go. लड़की को सोच रहे सारा कुछ यार। Attack! बहुत लोग बोलेगा तुम्हारे गाँव में Take this! जंगल की वाइट लगी हुई है। Who goes there? कितने से लड़ना पड़ेगा यार।
Attack! Free! Take this target alive! Try it! इधर देख, इधर बहुत देख एक जाता है और एक आता है जब बग की बात कर रहा है भाई फिर तो से लड़वा दिया यार इसने Stop! What's all this about? Lady Kuching, these two strange people suddenly appeared. They seem to have designs on the Guizhong ballista. Who are you calling strange? You want to go to the Jade Chamber? Who are... We're invited guests, here to look for the Liu Qixing. Who are you? बोलो भी Well, as it happens, I am one of the Liu Qixing. क्या बात है Oh! I'm Kuching, the Yuheng of the Qixing. ओहो I know of you, traveler. You're Ningguang's guests, yes? Didn't expect to meet you here in the mountains. Wow. Paimon didn't think we'd meet some super rich big shot out here in the middle of nowhere either. The Guizhong Ballista in Tianheng Pass has long been in disrepair. And yet, it was fixed in a single night. I came here to investigate that occurrence. हम ही तो सही करके गए थे These Millilith are just here to guard the scene, not to arrest anyone. छोड़ दिया गरीब को So, this was all a misunderstanding? Paimon never would have thought. Anyway, for a mortal to be able to repair an Adepti mechanism is quite the mystery, even to the Qixing. That was... Huh? Oh, right. So, Lady Yuheng, might you have any idea why Lady Tianquan invited us to go to the Jade Chamber? Just call me Kuching. I'd say that Ningguang's purpose is to request that the savior of Mondstadt take a more neutral stance. Or at least, to not wholly side with the Adepti. We're not taking sides. We spoke with the Adepti. They want to protect Liyue as well. When you say protect, you're referring to their sanctimonious arrogance, aren't you? Huh? You are mortals, and thus under their protection. There was no way they would have regarded you as someone with the ability to assassinate a god. बताओ मारने के लिए बोल रहे हैं Naturally, they would also regard Ningguang's locking down the area, questioning the citizenry, and pursuit of the assassin to be pointless work. Perhaps they even wonder if there might be a cover-up. I'll say it like it is. They're underestimating us. Well, you've got a point there. Still, this is the first time Paimon's seen a person from Liyue who doesn't respect the gods or the Adepti. बात बोलता हूँ Should I respect the shallow sense of time and condescension to mortals that has caused them to delay in moving against us, Qixing? Forget it. I shouldn't speak of them this way. विश में This क्या मिला skepticism is मोना mine मिली मेरे alone, को मोना मैं and दिखाता Ningguang हूँ does not share it. Either way, I will admit that the actions of the Adepti this time were quite restrained. Rex Lapis's death is indeed an extraordinary circumstance. But to think that they would call for a council of Adepti rather than come down here directly. How surprisingly civilized of them. Well, for Ningguang, she would talk anything and everything out if she could. But I doubt we can do that here. The time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Another super bold statement! I'll stop here. Honestly, I hadn't intended to say so much. But you're a good listener, traveler. वही तो कर सकते हैं हम You should both be off to the Jade Chamber. Don't be late now. Ningguang's schedule is packed to the gills all the way till next year.
The cream of Liyue's mercantile crop all see ascending to the Jade Chamber as the greatest honor. Each brings rich gifts as they visit, all to curry a little favor with Ningguang. Favor? But... Wait! That's right! Greeting gifts are a staple of Liyue's culture. We need to get one. Not to curry favor or anything, just to respect Liyue's culture. All right. You can decide on your greeting gift yourselves. Let me tell you how to get to the Jade Chamber first. You didn't actually have to come to Mount Tianheng. Go back to Liyue Harbor. Find a guide at the Yuehai Pavilion, and, well then, may we meet again, traveler. तो कब मिलेगी रे मेरे को? Well, that Yuheng may not respect the gods, but Paimon thinks she's a pretty cool person. So, what should we give to Ningguang when we see her? Oh, right! Paimon dreamed of an amazing snack last night. Sugar frosted slime! Paimon has a feeling that it would be perfect for a super rich person like Ningguang. Why don't we go with that for a gift? With a certain boom shakalaka, of course. Boom shakalaka. Let's go gather ingredients. Time waits for no one, and neither will our riches. देख रहा इसको से मतलब है अपने काम से भैया खतरनाक फिल्म पाइमन हाँ भैया कैरेक्टर के बाद भैया हम दिखाते हैं ये रही मोना अब समझ में नहीं आ रहा है हंसे की रोए My sister summoned for first time in an idea and she got kissing भाई मत किल पा यार प्लीज डोंट मुझे अब मिल रहा है कैरेक्टर जब सब चौपट हो चुका है स्टार्टिंग में मिले ही नहीं मेरी आईडी इसलिए तो बैंड बजी पड़ी इसकी I'm hungry. Let's hunt. इसको भी भूख लग रही है बता दो तो इधर है एक और किधर है चलो पहले इन दो को ठिकाने लगाते हैं गिव अवे की पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी क्वेस्ट का नाम क्या है एक मिनट इट्स टू लेट तो नाम ही चेंज हो गया होगा न्यू स्टार अप्रोचेस है मेन जो वैसे भी दिखाया था उन्होंने इसके ट्रेलर पे 725 एक्सपी है 30 प्रिमोजेम्स आई नीड मच मोर प्रिमोजेम्स सो मच टेस्टिंग या फिर डायलॉग मिल जाता तो बढ़िया था वैसे अभी अटैकर के डायलॉग सही था पर अभी रेजर है तो काम चलेगा इसका पावर डैमेज अल्टीमेट पड़ता है इसका क्या बस ऑल्ट की दिक्कत है समस्या अपनी ऑल्ट वाली है Look at that slime! It looks crystal clear and very delicious. That's the one. यार रुक जा मुझे मेरी इतनी लाइफ कैसे जाएगी आओ मजाक कर रहे हैं भाई एलिमेंटल डैमेज क्या ही पड़ रहा है मुझे भी देख रहे हैं ये कीड़े ले जा रहे इतनी लाइफ बेटा इनको लड़ने का मतलब नहीं है कम से अपन यार पूरी लाइफ तो यही लोग उतार लेंगे Let the show begin. Go, Barbara, go. अरे वहाँ नहीं मारना इग्नोर उनको प्यार से सुला दिया है यहाँ पे इसको
ऑटो सेट तो यहाँ पे भी है। अपने फंसे वीडियो लोग ये तो बहुत मारेंगे। Huh? Is it just Paimon? Or is there a sweet fragrance in the air? Huh? Did you hear that? No! That was definitely someone in trouble. It came from those ruins over there. Uh-oh. It looks like the treasure hoarders have locked someone inside. तो हमें उनकी पिटाई करनी पड़ेगी as always. There's no We're open. That was thorough time. What's this? Dodge this! What's the hurry? We're open. टिप्पो हाँ पे भाई Dodge this. चाबी मिल गई पहले तो अपन ये सब उठाएंगे फ्रेश वाले तो हेलो भैया मैंने आपको खोल दिया Thank you for your help, kind travelers. If you hadn't come to my aid, I surely would have rotted in this cell. Those treasure hoarders, when their mood was good, they'd rearrange those pots of sweet flowers. When they were in a bad mood, they'd rearrange my face. Aw, it was nothing. No need to thank us all at once or anything. I understand. Don't worry, I will compensate you both. Don't say that. I only escaped this predicament because of you. I'm Meng Dan, a supplier for Mingxing jewelry in Liyue Harbor. I often walk around these mountains in search of antiques. I never expected that those treasure hoarders would have their eyes on the same ruins that I had. Before I knew it, they'd caught and imprisoned me. Is there anything that you lack? Antiques, treasure, various knickknacks, you name it. Well, as long as you want what I have to offer, of course. Wait a moment. Actually, we are looking for something. Oh? And what might that be? Do you have a box that can store presents? We'd like a pretty one. The kind that you can use to store snacks. Of course we do. How can one sell antiques without gift boxes? At Mingxing Jewelry, we have the best gift wrapping service in the 7 nations. Oh, big shot हाथ लग गया. Now just give me a moment and I'll let the boss know. You can go see her whenever you require that box. Great! Paimon's sugar frosted slime now comes in a beautiful package. Equilibrium. Liyue Harbor. Here we come. Ding 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 ding. Oh my god. Oh, यहाँ से नहीं आ सकते. Leo Lee Pavilion. Best Lee food in मेरे अंदर नहीं आने देते यार यहाँ पे. मैं कितनी बार ट्राई किया यहाँ पे अंदर नहीं आने देते. Hey there! Uncle Meng already told me about it. Thank you both for saving touch him. भी नहीं किया.
Many of the best goods in our store were found by Uncle Mung. If anything were to happen to him, it would be impossible for us to continue doing business. Here, this container is itself an antique, with at least 140 years of history. It's already been cleaned. Will it do? Yep. It's great. Hang on a moment. Could we borrow one other thing? Sure. Please help yourselves. As long as it's on our shelves. Traveler, this clay pot looks really awesome. If we use an antique as our mixing bowl, we should be able to make a great snack. It's done! The one and only sugar-frosted slime! Carefully now. Into the box it goes and dust it over with a bit more powdered sugar. Oh, yes. You might want to use these 2 freshly picked flowers as decorations, too. Woohoo! It looks beautiful! Wow. Slime ko pelna. Great! Now that we've put all that we've got into this box, let's go to the Jade Chamber to see Ningguang. ट्राई करता हूँ मैं फ्रोस्टेड मिठाई बनाने की बिना स्लाइम के. फ्रोस्टेड क्या बनाए अपन? आइस तो अपन बना ही लेंगे. आइस में अंदर स्लाइम को कुछ मिला है. बाबा ये गाइड की थे. उधर से शॉर्टकट पड़ेगा. वैसे तो वहीं से घूम के भी आ सकते थे. उड़ के जाने का मजा ही अलग है. लिफ्ट तो यहीं है. According to Kuching, this is what we should say. Excuse me, do you sell the moon here? Yes. How many would you like? No. It's not convenient to speak of numbers here. Ah, well said. Please, use this to ascend to the chamber. Yes, speaking of which, are you two the guests that Lady Ningguang has arranged to meet with today? Yep. And yet the code they used was not the one for guests, but for the Yuheng. What's going on here? इसके दिमाग की बत्ती उलझ गई है. गेस्ट किसी और का है, कोड किसी और का यूज किया है. बे सालों दिखाते तो कैसे जा रहे हैं भाई. चीटिंग. Ningguang is here. I've been waiting for you, returnee from Joyun Karst. It's Ningguang. Since this is our first meeting, we've prepared a gift. I hope you like it. Oh, for me. You have my thanks. It seems that I have made things difficult for you, considering that you were supposed to be my guests. Oh no, it's nothing. पाइमोन ने नहीं खाया, वो अच्छी बात है. This palace floats in the skies, higher than the peak of any mountain. From this vantage point, one may survey all of Liyue. क्या बात कर रहे हो? I have been gathering the funds necessary to build it from the time I began learning the merchant's craft. And since becoming the Tianquan, I have spared no effort in hiring the best craftsmen to constantly extend it. सही है. At first, it was but the size of one room. Now, it is large enough to blot out the moon in the skies above Liyue. क्या बात कर रहे? रियल में बना सकता है क्या कोई? One day, I believe it will overshadow all 7 nations. Not many from outside Liyue earn the right to ascend to the Jade Chamber. But I have been in correspondence with the acting Grand Master of the Knights of Favonius, who spoke highly of you. As such, I have been putting eyes and ears out ever since you reached Liyue. What? And I finally got wind of your movements when you were on the way to Wangshu Inn. Wait, was Vergoldet one of your people? Just Vergoldet? No. No.
Everyone at Wangshu Inn is one of ours. धमका दिया भाई इसने तो, गाली दे दी उसने तो मनी मन. At the Guizhang Ballista, yes? You weren't peeking on us from the skies the whole time, were you? I fear that peeking would have been a little difficult from this altitude. Our eyes and ears are more than sufficient. You two are very interesting people, after all. It would be natural to take an interest. Well, I wouldn't expect you to trust us, considering that you have had far more interactions with the Adepti. The reason I invited you here was to clear up some misunderstandings. सही बात है, सीधे गॉड से डील कर ली अपन ने. I believe that you've heard of the Archon War. Many gods used to walk this earth, and many long wars were fought between them that did not abate until 2,000 years ago. Much blood was shed, and many lives were lost. In the end, only 7 victors remained standing in Tevat. They built cities and nations on the corpses of the vanquished, and thus began the era of the 7. You can see Goyun Stone Forest from here, I trust. It is no natural rock formation. Those are giant spears of rock hurled by Rex Lapis during the war. Beneath the spears lie those cast down by Rex Lapis in those days, gods that failed to seize the title of Archon. Not only is it true that gods made, but the 7 changed over the last 2 millennia. Rex Lapis's passing is an unimaginable disaster for Liyue. But the Order of the 7 will not collapse simply because of that. सही बात है. और मैंने यहाँ पे शायद, yep, I knew. Another Lord of Geo will arise sooner or later. Yet, how are we to forget Rex Lapis? When that time comes, the relationship between the people of Liyue and the gods and Adepti will surely be different from before. Even in a new era, the Liyue Qixing remain Rex Lapis's former subjects. Do you really think us capable of having played a part in his demise? Of lacking the foresight to see the certain repercussions? That day at Yujing Terrace, it was also very sudden. Even I was caught completely off guard. You were there, you no doubt saw. But our enemy has long lain hidden within the harbor. If we do not act against them now, they will surely gain the upper hand. Hiding the Exuvio was a necessary maneuver to take the initiative back, to play the spider while our foes scurry about. Who's this enemy you're talking about? बहुत serious story चल रही है बाबा. What do you think, traveler? Huh? What are you two talking about? Well answered. The scenery out here is fine indeed, but the wind is a little strong. Our preparations to receive guests within are complete. So please, this way. पाइमोन की घंटी बजा दी. वैसे तो मेरे को लग रहा है चाइल्ड तो नहीं. क्या बात है, मैं तो चेस्टी चेयर ढूंढेगा इसमें. बाबा कहाँ पे कितने हैं, पहले देख लूँ के सराउंडिंग एरिया. ऐसे नीचे गिर सकते हैं. पे थोड़ा ध्यान देते हैं अभी. हाँ बता रहा है, फिर भी पूछ रहा है. By Shao, your cousin.
जेड चेम्बर में हम जा चुके हैं। अभी देखना है, स्टोरी तो काफ़ी तगड़ी लग रही है, इसलिए तो मज़ा आता है ऐसे प्लॉट और स्टोरी वाले गेम खेलने में। मैं पीसी पे ज़्यादा मज़ा आती है। What a huge hall! Paimon's never seen such a fancy place before. पाइमन तो डूब रहे थे, उसको तो अपन ने बचाए लाए। ये ताज़ा जिनको मैं उड़ा सकता हूँ। काफ़ी एक्सपेंसिव जगह है भाई। बहुत खर्चा किया है इसे बनाने में। पहले एक कमरा उड़ाया, उसे एक कमरे के दम पे इतना बड़ा तान दिया। इमेजिन करो ये कभी ल्यू हार्बर पे गिर जाए तो आधी आवाज़ ही नहीं पड़ जाएगी। आधी का कुछ तो उड़ाने का मतलब और कुछ। Be at ease, you two. Make yourselves at home if you wish. होम तो लूट गया हमारा। Can we really? I have invited you two here as friends. And when friends come over to play, our enjoyment comes first. Naturally. Whoa! Isn't this that legendary wall? Why, you've kept your ear to the ground, I see. That's because even the storytellers are talking about it. Everyone's after a piece of paper from that wall. It's super famous. That's because that wall records Leo's secrets. Merchants have always been attracted to secrets. But the secrets of the mercantile world are of no interest to you, are they, traveler? You're rather special, really, and I think you're quite aware of that. If possible, I'd like to have your trust. क्या बात है? कभी आओ फिर टीम में। But if you were to choose the more trustworthy person between myself and Kuching... Romeo David Salango, welcome to stream, buddy. You'd pick Kuching? What's up? Nah, I had a feeling. I originally thought her a bit too hard-headed. With someone of her character on the Qixing, I've had some extra messes to clean up behind the scenes. But after she said those words, the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Well, I must say that quite a few of my doubts have been dispelled. I won't deny that Rex Lapis's passing seems advantageous to us. But, for Liyue's sake, we cannot allow ourselves to be shackled by rumors of our usurpation of power. Indeed. It seems that you understood what I meant to say from the very beginning. I called for the gag order and for the Exuvia to be hidden to temporarily stabilize the situation, and also to prevent something similar to the incident in Mondstadt. With Rex Lapis's death, the Fatui have busied themselves with many clandestine actions beyond their diplomatic remit. As the Tianquan, one responsible for Liyue, I cannot be too concerned with appearances when opposing them. Allowing the rite of parting to take place was also meant to buy some time for us to take control of Liyue's administration. It's exactly as Zhongli said. The Qixing only provided the venue for the rite so they could use us for their own ends. Wait, that's right. Speaking of ends, could I say one other thing? Of course. Paimon's heard that anyone who sends a greeting gift gets a little something in return. So, does that include us? भाई ये क्या है यार भाई? It's all right. I like direct people. Well, we have made quite a bit of trouble for you recently. How about this? You can pick any one object here as you please, and you may take it with you. Yay! Paimon was just waiting for you to say that. Let's see, what should we एक कढ़ाई मिलेगी इसको पकाने का है मेरे को. One of the sheets on that wall. Don't look at Paimon like that. One of these sheets of paper will sell for crazy prices, even if it's only as large as Paimon's fingernail.
Just imagine how much more a whole untorn sheet would sell for. इसको पैसा ही दिखता है बाबा. ये वन पीस Let's की grab नामी है one, पहले the वाली. biggest one. Huh? Well, that was an easy search. The biggest sheet is right up there in the most obvious spot. Let's go with that one. La 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 la. Let's see what's written on it. Huh? There's a place marked with a circle on here. मेरे को 2 घंटे पहले Ooh, दिख could गया it be था. treasure? Whatever it is, it better make us filthy rich. Let's see what's written over here. Recipe for cooking paimon. Sigil of permission, something, something, Fatui, research, copy. Huh? Aw, that doesn't sound like treasure at all. This piece of paper shows that a Chising spy discovered traces of classified Fatui research on the Sigil of permission. कितनी रिसर्च करोगे भाई? Mingguang did say that the Fatui have been up to all Sigil of kinds permission of तो child mischief के in the पास ही shadows थी. of Liyue, spreading rumors, wanting to get their hands on the Archon's body and whatnot. But research on the Sigil of permission? Paimon wonders what they're up to. Speaking of which, there's also some connection between you and the Sigil of permission. God बनना है Seems मेरे there's को. still more for us to find out. Oh, you really think so? Well, should we not go then? Oh, so you're saying that it's precisely because we can't completely trust Ningguang that we should confirm the truth of what she says for ourselves. वैसे खुद ही पता करने ज़्यादा बेस्ट रहता है. That's way out of Paimon's league. Paimon thinks she's been nothing but good to us. Anyway, we'll see if you're onto something. Before we look for Zhongli at Dihua Marsh, let's go to the place marked out on these papers and see if the Fatui really are up to no good there. पिटेगी, ये पिटेगी मेरे से. हाँ, प्रीमोजेंस. I need प्रीमोजेंस. मैं जितने हो सब लाओ. $1 पेपर 50 मीटर की तो उसकी कज़न है. न्यूवांग इधर है. पीछे रास्ता है क्या? अपन मिलता है बाद में. ऐसा एक जगह बनाने का बाबा मजा आ जाएगा. मैं क्या डायरेक्ट आ सकते हैं इधर? I'm the best. I don't even gotta say put the rest. If you came for me, I'm aiming for the chest. Never give it less. Yes. और बहुत जोर से बारिश होती हुई. ओके, हमें इधर आना है. काफी अनसुलझी पहेलियां. लोगों के पास 4 क्लेम और यूज आ रहे हैं. मुझे एक देने में मैंने इतना टाइम लगा दिया. ओके, आइस वाला घूम रहा है. उधर पे एनर्जी है. फतू की भीड़ लगी हुई है यहाँ पे. ऊपर से स्टार्ट करते हैं. Cool it. Boba, get them! This should be fun. Go on, give me a go. झेल नहीं पाओगे बेटा. Cool it. Get out of my way. पेट मारा साले मोटू. Time to fulfill my duty. Freeze. ऐसे चलने का ही बात. Boba, get them! Dodge this.
वाले को भी। How can this be? My work finished. You are finished. कोई ऊपर वाला को तड़का दिया तुमने। There really were Fatui at the location written down on this piece of paper. And they look really mad at us too. और ये अर्थ वाले को छोड़ के क्या पता नहीं। गया पंगा। Cool it! Don't get frostbite! Boba, get these this! Dodge this! Boba, get them! अरे तेरी मार दिया मुझे को। Get them! Let's end this quickly! What's the hurry? Freeze! Hurry up! Roast and fry! Dodge this! Let the show begin! That really hurt! Brace you! बहुत दर्द हुआ मुझे, बहुत दर्द हुआ मुझे। This one's well done. Let's not waste time. Get them! मार रहा मजाक कर रहा है। An unfortunate fault. Let's end this quickly. Shouldn't get careless. Get back! Get back! Dodge this! Let's dance! This one will be frozen in time. This is bad. बेचारा एक बार झुका उसे घोड़ा ही बना दिया तुमने। I guess this is it. बहुत फट के खाया है तुमने। There are so many talismans here. And some stacks of blank paper too. What if Paimon seen this pattern before? But where? Oh, Paimon knows! It looks just like the sigil of permission the child gave you. But how did a relic of your death die end up in the hands of someone like Child? Suspicious. Oh, that's right. Cloud Retainer said that when the Lord of Geo created the Sigil of Permission, it wasn't to be used as some old relic. Talismans like that were once used in the Archon War to channel divine powers. Maybe the Fatui are copying the Sigil of Permission in hopes of achieving a similar effect. Being able to channel divine power in battle? Whew, that sounds pretty dangerous.
The plot thickens. We'll need to keep an eye on Child, that's for sure. पंगा उसी से है बाबा. Alright, that's enough sticking around here. We gotta go meet up with Zhongli soon. The last stop on our rite of parting preparations tour is Diluc Marsh. Let's go! Paimon hates being late. इसी के चक्कर में लेट हो रही है. Paimon hates being late. ये क्या तरीका है? ये टास्क कौन सा है? रिचुअल बिल्डिंग तोड़ के ही चलते हैं. पास में तो आ ही जाएंगे. Nice and spicy. अपने को वो चाहिए चाइल्ड में नहीं होना चाहिए अपने नहीं है अगर टाइम चाहिए. I'll protect us. Dodge this. Bye. ये पीछा कर रहे हो क्या भाई? यहाँ पे स्पॉन होकर तो चलते हैं. ओके सर, अभी तक तो स्टोरी वाइज मुझे काफ़ी पसंद आया भाई. मज़ा आ रही है इसमें. स्टोरी भी ज़बरदस्ती हुई है. और चिचा यहीं पे तो इनसे लड़ते हुए चलते हैं. Nice and spicy. Let's dance. Freeze! I taste blood. Dodge this! Don't frostbite! Freeze! Cool it! Nice and spicy. Cool it! Side pocket.
Everything, something and everything. ये रहा है। छोटू हमें क्या तुमसे खेलने का मौका मिलेगा? मोरा तो चाहिए मुझे। पता नहीं कितने देर पीट दूँगा। What's the hurry? करना तो बात पहले ज़्यादा मिलता था मुझे। Right on time. I myself only arrived moments ago. Too late. Did you enjoy your visit to the Jade Chamber? It was so big and pretty and expensive. Paimon's never seen such a fancy place before. Indeed. It's second to none in all of Liyue. Then you met with Ningguang, I trust? What did you talk about with her? She's super rich and so generous. Paimon thinks she's very friendly. दो चार दे जाओ ना उसमें रख के कटोरी में रख के दे दो। Yeah, his take on Ningguang is quite different from Paimon's. He thinks that even the tactless Yuheng is more trustworthy than her. Oh, so you also met with Keqing then? What did she have to say? She said the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? No respect for the divine. Indeed, contrary to the ever-bold Keqing, Ningguang is more of a businesswoman at heart. Though they are both members of the Qixing. Although she's friendly, there's no way of clearly discerning her true intentions. Yes, she has only relied on herself to rise to her current position. No ordinary person could ever achieve that. It's said that she's the one behind the constant expansion of the Jade Chamber. It's the second most important thing to her. Even if she ever gave up the position of Tianquan, she would never give up the Jade Chamber. The Jade Chamber is only second. What's the most important thing to her then? Why, Mora, of course. All Ningguang talked about was the Fatui this and the Fatui that. She said that after Rex Lapis was murdered, the Fatui have constantly been trying to sink their fingers into Liyue, and that they aren't to be trusted. That is how the Fatui have always been. It doesn't surprise me in the least. No matter what they may be planning, you must be careful when dealing with the Fatui. Always be on your guard. So, is there anything we need to get for the rite of parting in Dihua Marsh? Yes, as a matter of fact, there is. Today, we'll be gathering wild glaze lilies. Glaze lilies? But why did we come all the way out here? Doesn't the garden in Yujing Terrace have some? Even Qingsa village has glaze lilies. Oh, right! Paimon remembers that Madame Ping is always tending to flowers. Maybe we could ask her. No. Those lilies have all been gardened by people. They won't do it all. Dihua Marsh used to be full of glaze lilies. It is a sort of joyful flower that listens to human song. Before the Archon War, Dihua Marsh was all dry land and fertile soil. But the war caused landslides, and the land was flooded, turning it into the marsh you see now. Nearly all the glaze lilies were wiped out. कौन सा फॉर्म देना है वहाँ पे? और ठीक है, तो ले आओ, करा लो मैं। ठीक है, ठीक है, ले आओ।
Of course, there are some kinds of flowers that have been preserved and gardened by people in the city. But very few people know that glaze lilies may still be found in the wild. Wild glaze lilies have the strongest fragrance. If we want to follow the true tradition of the rite of parting, we must grind up the wild lilies and place the powder in a censer of everlasting incense. But I'll need your assistance in gathering these flowers. No, I need you to sing to them. Sing to the flowers will make them more fragrant. So how good is your singing? Really? Why doesn't Paimon believe you? We'll only know once he starts singing. गाना भी पड़ेगा अपने को. एक सेकेंड. गला साफ कर लें. गाना गाना है तो. I am back. कौन सा गाना सुनेंगे फूल? तो पहले पहुंचना पड़ेगा. मुझे एक चेस्ट तो दिखा है. पहले एक मिनट रुको. पहले चेस्ट उठाएं क्या अपन? टास्क तो उतरेंगे, चेस्ट भूल जाते अपन. Free! अच्छा खासा देखा है तो उसको जल रहा था धीरे धीरे. उधर से मारता है. इमोजेंस आन दो. दो ही सही पर आन दो. एक तो दिखे. It's time to sing whenever you're ready. Da 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 da. बारबरा का सॉन्ग हो. ये क्या मजा. These flowers are jumping. They look really angry. Is it because you sang a song from on set that they don't understand here in Liyue? का सॉन्ग लियो गा दे बवाल कर दिया. और ये क्या तरीका है? बुल्ले ने भेजा तो मुझे लड़वा दिया. मेन कैरेक्टर बेस्ट है. हमारी कम मेरी लाइफ ज़्यादा जा रही है. मेरी जाता है उसकी वाली बात कर ले. Frostbite! Come on, we can do it! आइस अटैक बात कर. कितना मारेगा दूर से?
साला उसकी रॉकेट लॉन्चर चल रही है। Nice and spicy. हाँ लिया होगा फिर। Those weren't glaze lilies. Glaze lilies wouldn't hit people. Put up quite a fight. This little monster is known as a whopper flower. Strange. These petals look interesting. The glaze lilies used as a disguise were buried with the whopper flower for too long. The result seems to have surprisingly potent medicinal value. Let's collect what we can of these petals. Well, that's nice and all, but will those petals be useful for the rite of parting? Unfortunately, no. That's so lame. Excuse me. Oh, ये नहीं है ये. Are you searching for glaze lilies? Yep. Oh, hey, it's... What's her face? Paimon can't remember. Hello, traveler. I'm surprised you still remember my name. Ah, that reminds me. How was your visit to the Jade Chamber? पहले अपन मिले ले क्या इससे? मुझे खुद याद नहीं. Well, it sure would have been better if you told us how to get up there. Didn't I tell you the way? Surely I did. Nope, we found the way on our own. Oh, I see. Uh-oh. I guess I really did forget to tell them. Something seems a little off about Ganyu. She's acting different from the first time we met. Where's her serious attitude now? Ah, well, I met you at that time as an emissary of the Tianquan. But now, I am simply out on a stroll to see the flowers. You came all the way out here to see the flowers? Why not just enjoy the gardens of the city? Yujing Terrace is where Rex Lapis parted from this world. If I strolled through those lonely gardens now, I wouldn't be able to bear it. Whenever my duties take me near Yujing Terrace these days, I draw the windows to block my view of the gardens. Oh, sorry, we shouldn't have brought it up. No, it's quite all right. I just haven't processed my emotions yet. When the Archon War came to its end 2,000 years ago, the first iteration of the Seven would gather in Liyue and drink with Rex Lapis. But 5 of those original 7 had already passed before Rex Lapis. It's truly a changing of the guard. Yes. Now that the spirit of Rex Lapis has returned to the heavens, only Barbados of Mondstadt remains of the first 7. अच्छा बारबेटोस ही बचा है, यानी अपना नाम वो कैसे बोल सकता हूँ मैं यार? The other 5, including Inazuma's Raiden Shogun, are no longer the same friends from 2,000 years ago. Of the current 7 Archons, the youngest is Sumeru's God of Dendro. He is merely 500 years old, whereas Rex Lapis was more than 6,000 years old at the time of his passing. God of Dendro, Sumeru. Sumeru अपना fire god हो सकता है. This means that Liyue had been under Rex Lapis's rule from the moment it was first founded 3,700 years ago. The city has never had to bid farewell to its deity. So what do you think of this farewell? Huh? This is a little sudden. As a mortal, I've never dared to imagine a Liyue without Rex Lapis. But as an Adeptus, I think I will eventually come to grips with reality. Since Rex Lapis has passed, the time of Liyue's contract with the gods and Adepti has now reached its end. Huh? Did you just say, as an Adeptus? Yes, I am a mix of human and Chilean. Adeptus blood flows through my veins. I fought for Rex Lapis and the city of Liyue during the Archon War. After the war ended, I signed a contract with Rex Lapis and took the position as secretary for the Qixing.
I've continued those duties to this very day. Well, let's save that conversation for another day. You say that you are here looking for glaze lilies? I also know where wild glaze lilies can be found. See, I've just picked one myself. Here, you may have it if you wish. We dare not refuse it. Oh, so did you sing a song before you picked the lily? Indeed, I did. I know this tradition well. In fact, I sang a local Liyue ballad to it. Wow, so you really know your stuff, too. Thanks, Gunyu. No, it is you who I should be thanking. If not for this chance meeting, I never thought that I would be able to contribute to the upcoming farewell for our ancient lord. If you would excuse me, I should return to my work now. Good luck. And that just about does it. Our preparations for the rite of parting are mostly finished. Given the ease of picking glaze lilies, I think this was a fitting end to our tasks, in more ways than one. Yeah, Paimon can already imagine him starting a business in Liyue. I've had enough ventures in my life already. Beginning a new undertaking is always difficult at first, and requires no small amount of effort. And once business is at full steam, the stress of it all only wears away at you over time. So you must be careful to take the time to step back and re-examine yourself. If left unchecked, the wear and tear on your heart may go well past mending. Wow. See? Zhongli sounds like he's already seen it all. Alright, I think it's about time we head back to Liyue Harbor now. गाड़ी है कहाँ इसके पास? ये टाइम देख कैसे रही है? कोई बताएगा? जिंदा हो जा छोटे. अरे छोटी, तुम्हारी तो वाट लगी है. Come on, we can do it! Let the show begin! जाहिल अपने साथ क्या करेगा? ये लोग ऐसा मार रहे हैं तो चटनी बना देगा. सिटी में घुस के बाहर आना अजीब लगे, इसलिए बाहर से आएंगे अपन. यार पर अपना ही पायरो डैमेज अपने को पड़ रहा है घास जलने पे, कुछ ज़्यादा ही पड़ रहा है. मैं हवा में उड़ रहा था क्या? फ्लाइंग बूट्स टेक्निक. What happened? The city gate is swarming with Millilith and the Fatui? हम ही बजा के आए वैसे तो उनको. Ah, you're the consultant to Wangsheng Funeral Parlor. Mr. Zhongli, I presume. The Millilith are watching our every move now. These are desperate times. We mustn't act rashly. Desperate times? The Adepti of Joyun Karst are finally on the move. Do they intend to exercise force? Most likely. I've heard that some members of the Qixing have already gone to meet them. Well, I say meet, but it's more like they're attempting to stall the Adepti outside the city. However, both sides were quite obstinate and hit an impasse. It seems inevitable, given the current situation. Okay. The Adepti do not acknowledge the Qixing. They only acknowledge the contracts of the Geo-Archon. If the two sides come to blows, Liyue Harbor will be in no position to stop them. Surely the Liyue Qixing are not the sort to give in so easily. Their boneheadedness is known throughout the lands. Yet it's because of that obstinacy that mortals and Adepti are now on the verge of conflict. And what now? How is it that the Fatui have come under fire? That's all Ningguang's doing. She proclaimed that in these tumultuous times, the Millilith must rein in the actions of the Fatui. Only now do they want to start keeping tabs on us? That's the Qixing for you. Anyway, Mr. Zhongli, you're one of Child's close associates. Please understand that your actions will reflect on us. Don't let anyone catch you off guard. It looks like things are about to boil over in Liyue Harbor. Do you intend to use your neutral identity as an intermediary between both sides? Or will you use your sword to turn the balance? It depends. Neither path is an easy one. Oh, by the way, Mr. Zhongli, we've heard that the Wangsheng Funeral Parlor has also been caught up in all of this. They're currently squaring off with the authorities at the gates. Things are taking a turn for the worse.
2 मिनट के लिए क्या I'm बाहर afraid I जाना must leave now to handle things back at Wangsheng Funeral Parlor. I hope that Master Hu has been able to keep things under control for the moment. Consider your next course of action carefully, traveler. If you're trying to prevent an explosion, it may be wisest to look for the fuse first. Having connections with the Fatui seems to be quite the double-edged sword. So what did Xiangli mean by looking for the fuse? Oh, Paimon gets it. If there's anyone that wants to see the whole city turned upside down, it's definitely him. He must be waiting for the moment when no one is watching to do something really bad. But where could we find him now? Where would he go at a time like this? पता तो है नहीं, फिर भी फालतू में बोल दिया मुझे होटल में आऊंगा। यहाँ क्या इस्तेस करा रहा हूँ, होना ज़्यादा सही रहेगा। लेट्स फ्लाइट ये Ew. Ding, 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 ding. पंछी बने उड़ के फिरे मस्त जगह में। चाइल्ड का अड्डा। ओहो 35 रिकमेंडेड पार्टी गर्ल बोल तो रहे हैं, पता नहीं अंदर से फट क्यों रही है। ये सही है, हीलर तो जरूरी है। ये हो जाए फिर अपन मिस्टोरन को बात करेंगे। मिस्टोरन से you can read up an item search so you know how to find more of it in the future. Knowledge is over. Wow! This is the Golden House? It looked impressive enough from the outside, but who would have guessed that it was even fancier on the inside? And so full of Mora. This is where all of Tibet's Mora is minted, right? In that case, maybe they won't notice if a few Mora go missing. Oh, so it's a trap! Tricky. Good thing Paimon's got you here. But even if we can't take any, we can still have a closer look, right? Or better yet, take a nap on top of a mountain of Mora. It's like a dream come true. Oh, right. Back to business. It's quiet. Too quiet. Surely someone's gotta be guarding something as important as the Exuvia. Huh? Look! What happened here? Uh-oh. Paimon smells trouble. Quick! We have to go make sure that the Exuvia is all right. हो गया पंगा। पंगा तो यही होना है 110%। You've already fulfilled your task as guides, so why do you still linger here? Haven't you already seen enough trouble for today? Huh? Who's there? If you were Fatui, I imagine that you would be entitled to a generous reward from the Tsaritsa herself. But now, you're nothing but dross, and you're in my way. छोटू तेज नहीं चलने का।
Although I'm deeply grateful to you that I was able to effortlessly find this secret location, don't you think that trying to stop me now would just be wasted effort? अब छोड़ दो, तुम तेज चल गए हमसे. Stopping the more immense, hiding away the exuvia. The Chising are really pulling out all the stops this time. So you've been planning to take the Gnosis from inside the exuvia all along? As one of the 11 Fatui Harbingers, it's my duty to see the will of the Tsaritsa fulfilled. She will get that which she desires. I'm not asking for your blessing, and there's nothing you can do to stop me anyway. The time for discussion and diplomacy has already passed. I mean, if it were up to me, I would have skipped that stage to begin with. But I'm willing to do as the Tsaritsa deems fit. Either way, we now come to my favorite part. A simple pleasure, and one that I am oh so delighted to be sharing with you. The battle. LOL. Child के मैं पोंगी बजा देगा. Battle? So you're the type that goes looking for trouble, huh? You could say that. पाइमॉन तेरे को फ्राई कर When देगा. Signora offended the deities outside the cathedral in Mondstadt, she swiftly left the scene once her mission was accomplished. Instead of confronting you directly, she chose to rely on the snow and ice to make her escape. She wouldn't want the knights to come running towards the sound of battle now, would she? When she faces a worthy opponent, she will prioritize her mission, weigh the outcomes, and consider the consequences of her actions. But as for me, the greatest pleasure of being a harbinger lies in crossing blades with strong opponents. We won't let what happened in Mondstadt ever happen again! Size देख के बोल रहे पाइमॉन, size देख के. Oh, so you intend to fight me? Good. I won't kill you, traveler. I'll just play along, to feel the thrill of battle. Short नहीं कर दे. Besides, you could never defeat me, not even in your wildest dreams. But hey, try to relish the fight anyway, because if you ask me, without that, what else is there? Fighting talk, I love it. Child पहले भी नहीं चाहिए था, तो बिल्कुल नहीं चाहिए. मुझे अब चाहिए शाओ. मतलब पहले भी चाहिए था वही. वेंटी का मुझे शाओ जबरदस्त लगा था. हाँ छोड़ू, कुछ बोल रहे थे. This chance is hard to come by, so show me all you've got. अबे क्या कर रहा है? 2000 की लाइफ. दिमाग खराब हो गया इसका. So come now, amuse me, and don't you dare disappoint. भाई मार दिया 10,000 की लाइफ एक बार में. Are you kidding me? ओ भाई मार मेरा पिचका दिया भाई उसने. ये कैसा बॉस जील है बाबा. उसकी क्या लाइफ जा रही है, हमारे तो पोंगी बच गई. आया मर गया. भाई क्या ही तीर मार रही है. पाया मर गया भाई. इतना जोर का फटका पड़ा उसको. 3 बार कैसे मारेगा मेरे को. क्लोज रेंज तो लड़ ही नहीं सकते उससे. अबे ये क्या वेल मछली फेंक के मार दी भाई साहब. क्या कॉमेडी कर रही है. अबे लाइव ले रहा, मजाक कर रहा है. इतनी लाइव कौन लेता है. ओ भाई साहब. मुझे पता है मेरा वर्ल्ड लेवल बहुत हाई है, पर इतना भी कम नहीं है. ज़्यादा नहीं होना चाहिए यार. I am dead. क्या होता तो अंदर फेल देता. भाई मेरी वाट लगी पड़ी है यहाँ पे. अकेली बार जिंदा है भाई. काया को तो एक फटके में मार दिया, तो जिंदा भी नहीं कर सकते भाई. इसका कुछ अटैक ही नहीं है. नोएल लेके आना पड़ेगा क्या शील्ड लगा के लड़ने के लिए. काया थोड़ा जिंदा था.
रंग चेंज करो भाई, थोड़ी थोड़ी लाइफ करके जैसे भाई। लो वेल मछली कूदेगी, अपनी वाइड लग गई, जिंदा बच गई थोड़ी सी। कुछ आधी लाइफ लिया और मेरी टीम भी 3 मर चुके हैं भाई। अबे रुक जा बेवकूफ, इतना कहाँ मार रहा है, मुझे भी तो मारने का मौका दे। 1-on-1 बैटल चल रही थी, फिर भाग गया पट्टू। क्या मजाक चल रहा है भाई, इतना तो उसमें भी नहीं दिखाई ट्यूटोरियल में जितना पावरफुल दिखा रहे हैं। लॉन्गली तो उसको अकेला पेल के चला गया था भाई, कोई इज्जत नहीं हमारे कैरेक्टर्स की। Cowering already? Nice and spicy. थोड़ा सा जलाने के लिए तो थोड़ा, थोड़ी लाइट मर गया, मैं मर गया। फिलहाल तो जिंदा है पर कभी भी मर सकते हैं। पर इसके बाद वाले को पैसे मारेगा मैं बाबा, इसी ने तेल निकाल रखा है। यांगलिंग मर गई फिर से। Dodge this. Cool it. Come on, Kaya. You are last hope. Oh, so sorry. Passable effort. Try this. Cool it. भरने दे बार बार कई बार भरने दे, सॉल्ट भरने दे बताता हूँ यार। ये चीटिंग है यार। और पाजी किसका, अरे पाजी तो एकदम सॉलिड है। मरना नहीं कहा, तू आखिरी उम्मीद बचा अटैकर में। 2 लोग मर चुके हैं, इसके बाद इसको मारना भी अलग से। तो हो गया 1 मिनट में शायद देख रहा हूँ यहाँ पे, इधर मैंने पलक भी झपका दी, मेरे को निपटा देगा। शैंगलिंग को जिंदा करना है। चाइल्ड के घमंड को एकदम शाह के घुटनों में खड़ा कर देता। फिशल लेके आना चाहिए था, मैंने ही गलती कर दी। फिशल लेके, अबे तेरी गेम से बाहर फेंक दिया यार, हट। नेट फक्ड अप कर गया भाई। बेबी शार्क 2-2। मेरा वाईफाई ऑफ हो गया यार। गेम डाउनलोड क्यों हो रहा है भाई, ये क्या मजाक है। यार इनने नेट ऑफ कर दिया यार वाईफाई का, दिमाग खराब हो जाता है यार। किस टाइम पे स्ट्रीम करे इंसान शांति से। बेबी शार्क 2-2, बेबी शार्क 7.1 व्यूज किसमें, 7.1 बिलियन व्यूज किसमें। बेबी शार्क 2-2, बेबी शार्क, वही तो पूछा हूँ किसमें। सॉन्ग है क्या, बेबी शार्क 2-2, बेबी शार्क। यहाँ के गाने होता मेरे को। वाईफाई ब्लिंक क्या करके गया, सत्यानाश हो गया यहाँ पे सब कुछ। नर्सरी राइम्स देख रहा है अभी। अच्छा खासा आधा मार दिया था यार उसको, और मेरे कुछ कैरेक्टर्स की बलि चढ़ गई भाई। फायर उनको तो देख ही होगा, बीच फाइट में से फेंका, दिमाग खराब हो गया यार। हेडफोन लगाए हुए बीरो, अरे क्या ही डिफिकल्टी बढ़ाई है तुमने वर्ल्ड की, बजा के देख। सब अभी कर लूँ।
तो एक आध दिन मेरे को फिर से लगवाएगा स्ट्राइक। यार ये धोखा है, दिस इज फ्रॉड। वाईफाई शिफ्ट करना पड़ेगा फिर से। पिंग इतनी जा रही हो तो मरेगा ही नहीं। क्रेस्ट। तो देखो भैया, हमारे साथ हो चुका है एक फाइट में धोखा। हमारे कई कैरेक्टर हताहत हुए हैं। डेस्पासितो को क्रॉस किया लास्ट वीक व्यूज में, क्या मालूम। ये मूर्ति बाबा हीलिंग चाहिए। थोड़ा सा लग रहा पैसा फूकना पड़ेगा यूट्यूब पे। कुछ भी ढूंढता रहता है तू भी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट व्यूज वीडियो ऑन यूट्यूब। लार्जेस्ट मोस्ट होगा, लार्जेस्ट क्या होता है ये? जिंदा नहीं होगी क्या? भाई लो, हीलिंग ही खत्म हो गई। क्या हील दे वो स्टैचू? मोस्ट व्यू टच होगा ब्रो। आई डोंट नो अबाउट दैट। मैं ये सब सर्च ही नहीं करता। मैं ज़्यादातर गाने सुनता हूँ। मेरे को म्यूज़िक अच्छा लगता है, वो फ़र्क ही नहीं फिर लैंग्वेज कोई सी भी हो। मुझे लाइफ दी है, वापस ले ली, मुझे समझ में नहीं आया। अबे सारे स्टैचू खाली हो गए क्या? ये क्या मजाक है? जियो आरकॉन के ख़त्म हो गए। एनिमो पे चलते हैं। माजे इंग्लिश चे लगेले। कोई बात नहीं, एक स्टार बना के तुम दिखा रहे हो यार। आई नीड बहुत सारी ब्लेसिंग्स। तू भी खा ली। अरे क्या चल रहा है ये? 45 साल लाइफ है क्या अपने टोटल इन सबके मिला के? Ready, steady, go! बार जिंदाबाद। सॉरी। मेगा स्टार इन मॉन्स्टेड रीच रेपुटेशन। हाँ, रेपुटेशन का तो मैं किया ही नहीं कुछ। बैटल पास। रेपुटेशन सिस्टम तो मैं देखा ही नहीं किधर था। एक कर दिया है, 3 बाकी कर देगा मैं। भाई ये अब तो बॉस गंदा मारने वाले हैं। रिस्पॉन होगा कौन? अच्छा बोरस। ये सही चीज़ है। अब यहाँ पे रिस्पॉन टाइम दिखा देंगे। डोआलिन किधर है अपना? डोआलिन हट जाओ, सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे। टीम तो पूरी हीरो हो गई है। इनको आज क्या तकलीफ हो रही है? हेलो? नहीं है। अरे अभी कहाँ खुलेगा? दिवाली की छुट्टी लगी होगी। Is there time for a quick snack? I'll whip one up in no time. अरे आ जाओ, रहने दो, दिवाली के बाद करा लेंगे। दिवाली के बाद करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
तो तगड़ा तो यही है। रेजिस्टेंस वगैरह अपन नहीं लगा गए थे ना, इस बार सब लगा के जाएंगे अपन। फिशल किसकी जगह ले जाए? शिंगलिंग की जगह फिशल मतलब नहीं है। इसी को थोड़ा लेवल अप कर सकते हैं क्या? पार्टी में क्यों घुसा? If there's nothing better to do. अरे तू शांत हो जा अम्मा। अपन और कहाँ जाएगा? ये नहीं है यार। फिजिकल डैमेज बोनस। थोड़ा सा तो अपने को बढ़ाना पड़ेगा, अपने प्लेयरों को दम कम देनी पड़ेगी। अटैक बड़ा, फिजिकल डैमेज, क्रिटिकल रेट वैसे ज़्यादा बड़ा मजा आ जाती है अगर बढ़ जाता तो। HP तो फूंक मार के उड़ा दे रहा वो भी। कैसा अटैक बढ़ा तेरे बाबा। वाह गिव अवे। यप डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, कल थोड़ा और अपन डाल देंगे टाइटल में। क्रिटिकल रेट बढ़ गया। चलो HP बढ़ा और अटैक ठीक है। HP क्रिटिकल रेट बढ़ जाए, मजा आ जाएगा। डिफेंस बढ़ा थोड़ा सा, ये भी चलेगा। हीलिंग बोनस लगा के रखा है ये। हिट रेट मिल जाए या फिर HP भी चलेगी। क्रिट डैमेज बहुत सही, यही चाहिए। क्रिटिकल डैमेज ही अपना बढ़ना चाहिए, फिर अटैक। क्रिटिकल डैमेज वैसे ज़्यादा बेटर है। डिफेंस बड़ा। आई रोल 2 times एंड गॉट एम्बर। क्या बात है, एम्बर ओपी बोलते। मुझे इनमें फूकना नहीं था, पर अब कोई ऑप्शन नहीं है, चाइल्ड को ठोकना है। बेइज्जती हो गई। एक तो बीच फाइट में अलग बंद हो गई नेट अपनी। भाई डिफेंस नहीं बढ़ाना था यार। एम्बर इज वेस्ट भाई, एम्बर इज ओपी। 6 कॉन्स्टिलेशन कर उसके, कॉन्स्टिलेशन फुल होने दे, एम्बर ओपी है।
अब इसका थोड़ा देखते हैं अपन स्टेटस क्या है अपना। अटैक 1200 आया, डिफेंस 661, 13,000 की लाइफ पहुंच गई। चलो ये अच्छा है। 13,790। ओके, ऐसे तो नहीं देख पाएंगे, ऐसे देखना पड़ेगा। क्रिटिकल डैमेज 59, एलिमेंटल अपना 52 ही है। आई गॉट टू कॉन्स्टलेशन। ओके, और चाहिए। हीलिंग बोनस 21% है। एलिमेंटल मास्टरी 52 है। 18,000 इसकी लाइफ है। 12, 16, 4, 8, 8, 4 वाले को पकड़ो। अटैक एचपी है वैसे, इसमें अटैक को करके मतलब नहीं है। एचपी क्या ही हो रहा है भाई। इसका पिंग अलग हाई चल रहा है। और कितनी बार रिसोर्सेज डाउनलोड करेगा भाई। एक बार कर ले, ठंड पा ले। यार ये क्या मजाक है, बार बार डाउनलोडिंग रिसोर्सेज दिखा रहा है। ये तो अच्छी लगती है कॉमेडी ये वाली। वाईफाई रिसोर्सेज दिखा रहा है। ये तो अच्छी लगती है कॉमेडी ये वाली। वाईफाई नोटंकी कर रहा है अभी अपना। नहीं, पहले चाइल्ड मरेगा उसके बाद खाऊंगा। क्या बना? अरे अभी नहीं खा रहा, मैं बोल दूंगा। काम कर लो। लॉल, अरे यार ये बहुत दिक्कत दे रहा है यार नेट। आई हैव रीरोल एटलीस्ट 30 times until now. I still have not got any 5-star characters and have 3 main ID with no 5-star character and Diluc is OP. ओहो, दिल की बात। ओह, रिडीम कोड डालना भूल गया था मैं। और जी हमारी हीलर तैयार हो रही थी, फिर अटैकर बनाना था हमको। अब फालतू को चोट करवा दिया। एचपी एनर्जी रिचार्ज एलिमेंटल मास्टरी। आठ वाले को 12 पहुंचाते हैं। चाइल्ड से लड़ने की फुल तैयार है हम। चाइल्ड को हम ठोकेंगे भी। जो भी गिव अवे के लिए चैनल पे आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में देखो पूरी डिटेल्स दी हुई है कैसे क्या अपने को पार्टिसिपेट करना है गिव अवे के लिए। एशिया सर्वर है, आपको कैरेक्टर अपना डीलुक और क्ली दोनों मिलेगा उसमें।
18,000 कुछ लाइफ थी अपनी, 19,000 पहुंचानी पड़ेगी, 19 से 20,000। एक तो जिसके लिए काम करने आते अपने को वो भी नहीं मिलता, मोरा ही ख़त्म हो जाएगा कुछ टाइम बाद। लो लेवल 3 के भी आर्टिफैक्ट्स ख़त्म। 4 के बचे हैं, ये क्यों बचे हैं 4 के? यूज़ ही कौन कर रहा है इनको? HP डिफेंस एलिमेंटल मास्टरी है, यहाँ अटैक, क्रिटिकल, एनर्जी रिचार्ज, HP डिफेंस। मेडेन का अपने को भी कुछ मिला था मेरे ख्याल से। चाइल्ड DPS नहीं है, पता नहीं सपोर्ट ही होगा। मेरे पास है कहाँ जो मैं बता दूँ अभी तो सब नेट देख देख के बोल देते हैं फिर भी। और इतना अच्छा सपोर्ट भी नहीं है। बहुत मन के नाच रहा था ऊपर, बताओ अभी। कितनी पहुँच गए अपने? 19,000 पहुँच गए। इसकी 13 है, इसकी 13, इसका तो कुछ है ही नहीं। स्पेशल रखते हैं अपन उसकी जगह। I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the Prinzessin different. रहने तू रहने दे, तेरे से ना हो पाएगा, तू रहने दे फिशल। HP अटैक +16 तो है ये, +5 है अटैक, बढ़ा देते हैं इसका। मुझे ही सेलेक्ट करने पड़ेंगे। 1 2 3 1 2 3 4, अच्छा नहीं होगा। डिफेंस मिला, अटैक बढ़ गया। अटैक वाला है ये हटा देता हूँ। ये रहने दो, ये भी रहने दो, बाकी सब फूक दो। क्या है? हाइड्रो डैमेज है, एलिमेंटल मास्टरी, अटैक्स, ये भी जान दो। ये क्या है? एनर्जी और अटैक, HP खत्म करो। अटैक 4.2% और क्या चाहिए? 918 का अटैक, 11,000 लाइफ। बार बार का 3 कॉन्स्टलेशन है, फिर भी कोई इज्जत ही नहीं है। तभी टिकी थी वैसे कायदे से तो। 52 एलिमेंटल, 127, 82, 156, 0। और इस एलिमेंटल ही नहीं है। I created an क्ली 11,000 की लाइफ। These bombs so heavy. मेरा एलिमेंटल मास्टरी 200 कर दिया, बहुत सही। डैमेज अच्छा होता है उससे। अच्छा एलिमेंट का In the name of the Prinzessin. सही है, सही है। अब लड़ने जाएंगे, पाना होंगे तो होंगे। उसको ऑप्शन नहीं उसको मारने के अलावा अपने पे फिलहाल। We had to kill him first hand. जो भी स्ट्रीम पे आ रहे लाइक करते जाओ। गिव अवे की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर कुछ समझ में ना आए तो इंस्टा पे मुझे DM करो। यार बहुत मारा यार उसने।
पिंग भी अपना आई है ना, मैप कब आएगा पता नहीं ब्रो, नो आइडिया। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं बता दूंगा। अपना अभी मेरे को रिडीम कोड भी इसका याद है, गेंशिन गिफ्ट करके अगर किसी को रिडीम करना हो 50 रिमोजन्स मिल जाएंगे। मुझे चाइल्ड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डायोना। और फिर शाव का आएगा तो अपन उसमें देखते हैं। यार एक मिशन कंप्लीट नहीं होगा तो कोप भी नहीं खेल पाएंगे। समस्याओं का समाधान नहीं। फर्स्ट टाइम में मार सकता था मैं, मुझे थोड़ा मुश्किल पड़ता, पर अभी मैं सब कुछ लगा के जाएगा, बफ वगैरह सब कुछ। मैं तो स्टार्टिंग से डाउट है फतुई पे। एक सेकंड रुको, पहले गए दूसरे में क्या है अपने पास, ये अटैक अपना बढ़ेगा 12%, क्रिटिक बढ़ जाएगा, और क्या बढ़ेगा, हाँ मेरे उसमें डाल, और डिफेंस 126 तो कितने का बढ़ाएगा, 165 तो 308 तो अंदर, और क्या पायरो डैमेज, इलेक्ट्रो डैमेज बढ़ा देता हूँ, 2 है ना। ये आजकल रिफाइनिंग में वेपन लॉक का क्या चक्कर है। हाँ बहुत बार क्या है, अपना वेपन अपना जैसे 2 कैरेक्टर में यूज़ करना, गलती से अपन रिफाइन मार देते ना, तो वो चीज़ आई है। अनलॉक कर लो उस पर जाके, वेपन के ऊपर जाके लॉक पे टच कर दे, अनलॉक हो जाएगा। मैंने किया ना, मेरे को अपना केशिंग मिल जाती, उसका वेपन बहुत ओपी बना हुआ मेरे पास, उसका वेपन है मेरे पास 4 स्टार वाला। It looked impressive enough. This is where all of Tivat's Oh, so it's a but even if we can, or better yet, take it. Oh, right. It's quiet. Huh? Look. Uh-oh. Quick, we have. किसी का एक्शन नहीं है, इसी का फैसल कही है। You've already fulfilled your task as... Huh? Who's there? If you were Fatui, I imagine that you would be entitled to a generous reward from the Tsaritsa herself. But now, you're nothing but dross, and you're in my way. Although, don't you think that trying to stop... So you've been planning to take the gnosis from inside the Exuvia all along? As one of the 11, she will get that which she... I'm not the time for discussion either way. The battle. Battle? When instead of confronting you when she faces a word, but as for me... We won't let what happen... Oh, besides, you could never... Fighting talk, I love... This chance is hard to come by, so show me all you've got. So very few ever get the chance to square off with a Fatui Harbinger. So come now, amuse me, and don't you dare disappoint. By royal decree, I'll protect us! Cowering already? Shadow Raven, let night fall! I summon thee! Careful now. Rarely. Nice and... Take this. So quick to flee. मैंने औकात नहीं हमको उन्होंने लड़ने की, इस बार फाड़ दूंगा तेरे को बेटा, बहुत बहुत पार अप करके आऊंगा। Poor timing. How unbecoming. La la la! Ha! Oh no! Go, Barbara, go! Nice and spicy. By royal decree,
भाग जा भाग के। इसी की जान लाओ पे तो लगी पड़ी मर गई इस बार। One shall descend once again. अरे भाग तो खुद भाग रहा है, दूसरे को बोला था भी नहीं कर रहा है, खुद अभी भाग रहा है। फूक देगा बेटा, गोवा कर रही चलेगा। हाँ बेटा, 4000 का अटैक भाई, बड़े दिन बाद देख रहा हूँ। Taking this seriously. Haha, good. No wonder Senora was so wary of you. Well, that just means I can go all out. Brace yourself. This is about to get tough. Now, show me what you can do against the might of a harbinger. Okay. हमने भाले वाले बताओ। Very bad feeling. All you do is run. कितने बार पिटेगा बेशरम आदमी? आज तो गोवा बेटा समझाओ उसको। ओ भाई पूरे लाइफ की लंका लगा दी। तेरे डिनर में ले रखी है। By royal decree. ओबे क्या लाइट बता रही है? Take me back. बहुत मारो तो अच्छा मेरा सब कुछ खत्म हो गया। ओके ओके बूस्टर खत्म हो गया। गाइस भी माय बूस्टर इज एम्प्टी। सभी पे चल गए। यार इतना हटने के बाद ही पड़ गया। As you wish, main Fräulein. स्क्वाड में अभी नहीं आ सकता ब्रो। वेट अभी नहीं आ सकता मैं। I'll protect us. No, did I ruin everything? By royal decree. No use hiding back there. This realm is no home for a princess. La la la. Raging tide. तू रुक बेटा तू रुक। बजा रही है। Into the fire. No. भाई क्या गंदा डैमेज है भाई, अति गंदा डैमेज। इसको बचा के रखना पड़ेगा। अगर मेरे को हीलिंग लगाना है बड़ी समस्या है। Why has everyone stopped singing? मुझे लग रहा है नोएल की जरूरत पड़ने वाली है। एवेंडन नहीं करूँगा। सालों कहाँ से खाऊं मैं? कंटिन्यू तो पड़ रही है इलेक्ट्रिक अटैक। मेरे से भी नहीं हो रहा है, ये दिमाग खराब हो गया है मेरा। अरे मैं कर दूंगा। फर्स्ट टाइम वहाँ चोट हो गई थी, इसमें मैं कर दूंगा अब। तो थोड़ा कैरेक्टर मेरे हैवी डैमेज डीलर नहीं है मेरे पर ढंग का, और उसने साले रेजर को पहले ही मार दिया। इसके बाद एक और आता है। हाँ पता है, 3 आते हैं ना, 3 बार आता है ये। आई नो एक तो उसकी फिर पूरी स्टोरी सुनो, अलग ही लचांड है ये क्या है? अच्छा ये भी लगा सकते हैं। अच्छा मैं अटैक डिफेंस ये लगा गया था, ये नहीं लगाया था मैंने, ये भी लगाऊंगा। स्टेमिना 3 बार आता है। हाँ लास्ट मास्क पहनेगा ना वो। अलग ही समस्या है जिंदगी में। काफ़ी टफ पड़ रहा है फिलहाल तो। टीम सही होगी तो उसकी कोई औकात नहीं है ब्रो।
अरे इलेक्ट्रो है, मेरे को काया लेके आना पड़ेगा, पर काया लूँगा तो फिर ये चली जाएगी। मैंने कर लिया। अरे क्या बात है, बहुत सही। ओपी। मैं लास्ट वाले स्टेज पे मरा था, उसका 10 HP था। पीसी में इजी है, बहुत टफ है। हाँ पीसी में कंटिन्यू कर सकते ना, तनादन स्वैप कर सकते हैं। सबको हील हो गई, चलो अच्छी बात है। काया लेके आना भाई, अपडेट के बाद कुछ न्यू आया है। अपडेट के बाद नए पे यही आया अभी, चाइल्ड कैरेक्टर में दिखा देता हूँ मैं। चाइल्ड मुझे चाहिए नहीं, मुझे चाहिए डायोना, मुझे डायोना चाहिए। 147 अपना समन भी नहीं कर सकते, डायोना ही चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। जो भी नया आ रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब करो भाई। छोटा छोटा सपोर्ट अपन बड़ा बड़ा एडवांटेज दिखाएंगे। उसको मारते टाइम पे कर दूंगा लग रहा है लाइव बाई फील, क्योंकि वहाँ अपना सब कुछ बूस्टर ख़त्म हो गया था ना एक ही बार में। सेव करी ब्रो, दूंगा मैंने 5 किया, बाद में करूँगा स्पॉन। ओके, बेस्ट ऑफ लक और समन्स, और गुड लक और सारा लक। शिंगलिंग अपना क्लोज रेंज में तो यही है, लॉन्ग रेंज फाइट फिशल ले सकती है। फिशल का उतना अटैक नहीं है, अटैक इसका बेस अटैक और बढ़ाना पड़ेगा। 918 तो पहुंचा दिया है, और बढ़ाते हैं इसका अटैक। लक की तो मुझे ज़रूरत है, हाँ सबको ज़रूरत है भाई। कैरेक्टर अपग्रेड के लिए एक्सपी नहीं है, उसमें भी टाइम लगेगा ना। नहीं वो हो जाएगा, कैरेक्टर अपग्रेड की मेरे को उतनी टेंशन नहीं है। 12 ही पहुंचा देता हूँ, 11। ये भी ख़त्म हो गए थे 4 स्टार, ये बचे, मैं खुद ही ढूंढ लूँगा, बेस्ट है। देख डिस्कॉर्ड, एक सेकंड, डिस्कॉर्ड देखो। मुझे भेजा है क्या? मुझे क्या डीएम किया है कि खुद के में भेजा है? कुछ मुझे दिख नहीं रहा। ओ भाई, ओपी ओपी भाई, ओपी काफ़ी बढ़िया कर दिया। इसका थोड़ा देखना अपना, क्या बोलते हैं, चल मैं तो बाद में बात कर लूँगा। ये काफ़ी बढ़िया कर दिया। सर्वर स्टेटस कर देना ऊपर, वो इम्पोर्टेंट जैसे लिखा था ना वहाँ पे। सर्वर स्टेटस कैसे करेंगे अपन उसको? बढ़िया बढ़िया, मज़ा आ गया। थैंक यू ब्रो, बहुत मज़ा आ गया मेरे को तो देख के। 185 अटैक, क्रिटिकल रेट मिल जाएगा, मज़ा आ जाएगा इसमें।
अरे तू कर दे यार। 232 फुल हो गया ये। इसका बेस अटैक जाएगा तो अपना काम होगा। ये कितना है? 10। इसमें क्या अटैक एनर्जी फूक दो। ये नहीं अटैक है इस पे, ये फूक दे रहा हूँ। अरे तू ये कर ले भाई। अटैक +4 क्रिटिकल डैमेज HP एनहेंस फुल तान दूंगा इसको भी। ये क्या है? HP क्रिटिकल डैमेज क्रिटिकल रेट सब फूक दो। अटैक डिफेंस कोई काम का नहीं। HP था क्रिटिकल डैमेज नो प्रॉब्लम फूक दो। नहीं यार ये छोड़ दो। डिफेंस अटैक HP। कितना अटैक आया इसका? 1105। ओके 1200 चांस लग रहा है अब जाने का। मतलब पूरे फूक दिए। शेंगिंग की जगह सोच रहा हूँ बैनेट लेके आऊँ, क्योंकि उस पर भी हीलिंग है, पर उसको तो भेज के रखा है मैंने। सेकंड में आता हूँ। I wonder when I'll be as tall as my big sister. All the standing around is making me so sleepy. La da
da da da da da da da da. आर्टिफैक्ट्स भी फार्म करने पड़ेंगे, काफी सारे फूंक दिए अपन ने। 35 लेवल की पार्टी मांग रहा है, मैं तो ये सोच के दंग 35 लेवल में क्या ही करेगा जब 70 लेवल वाले लेवल है, बिडू 50 लेवल है, चीची भी 50 लेवल है। Wow! It looked impressive and this is where all of Teyvat's Mora is minted, right? Oh, so it's a trick. But even if we can, or better yet, take a nap on top of a mountain of Mora, it's like a dream. Oh, right. It's quiet. Huh? Look! What happened here? Uh-oh. Quick! We have... Back to business. You've already fulfilled your Huh? Who's there? If you were Fatui, I imagine that you would be entitled to a generous reward from the Tsaritsa herself. But now, you're nothing but drop. Although, don't you think that trying to stop... So you've been planning to... As one, she will get that which she... I'm not the time for discussion either way. We now come to the battle. When instead of confronting you when she faces a word, but as for me... We won't let what happen... Oh, so besides, you could never defeat me. Not even in your... Fighting talk, I love it! एक बार हारा हूँ इससे official. This chance is hard to come... तो वहाँ बकवास करते रहे, मैं एक जेट पार्सल ढूंढूँ तब तक. फिर उसके बाद तो कितना देगा 300 सेकंड के लिए 25%. ये तो रेजिस्टेंस है. फिर ये भी खा लो, ये भी खा लो. Bye. So show me all you've got. So very few ever get the chance to square off with the Fatui Harbinger. So come now, amuse me, and don't you dare disappoint. भूतनी के भाग गया. Cowering already? How unbecoming. फिर भाग गया भाई तो. Try this. Run all you like. A clear shot. फिर भाग गया. मेरा पार्ट तो रहता है. By royal decree. So quick to believe. You're wide open. Wide open. Wide open. बता रहा. Not bad, not bad. Celestial Voyager. This realm. अबे क्या मजाक है ये भाई? Princess. Part 2. Oz, reveal thyself. Go, go, go. I'll protect us. Get free. कैसे भाई? Good. No wonder Senora was so wary of you. Well, that just means I can go all out. Brace yourself. This is about to get tough. Now, show me what you can do against the might of a Harbinger. Insubordination.
कुछ भी अटैक आ रहे हैं समझ से पता नहीं। Midnight Phantasmagoria. I'll crush you. I summon thee. This realm is no home for princess. आधी तलाई बता रही है भाई कुछ भी यार, ये वाला अटैक मेरे को समझ में नहीं आया भाई, कुछ भी मारता है। Why has everyone stopped singing? Something else catch your eye? Race you! Nice fight! Help! Regenerate attack! मार ही डाला क्या सर्वाइव करेंगे सेकंड में, यानी 71 लेवल का, और इस हिसाब से मार रहा हूँ। सुपर कंडक्टर लगा के मार सकते हैं इसको। बहुत टफ पड़ रहा है, बहुत ही ज्यादा। कोई नहीं चाह रहे हो, पहले मैं टीम देखता हूँ। लास्ट वाले का एलिमेंट क्या है? सुपर कंडक्टर अपन लगा देंगे यहाँ पे, इससे लगा सकते, नहीं तो बेनेट। I won't hold you back much. मैं तो पहले बोल दिया, ये काम की चीज है भाई। बेनेट में तो कुछ है भी नहीं। पूरे हीलिंग सेट लगा के रखें। अटैक कितना बेनेट का 241 का अटैक है, 8 डेयर के लाए हुए, बार में फूंक देगा रे इसको। एक सेकंड, इसके एचपी के हिसाब से मिलेगा ना। ओके ओके, एक तरीका है स्विच, इसके पूरे शैंगलिंग से अपन स्विच कर लेते हैं।
472 10,000 की HP हुई है। लेवल इसका कम है, 50 कर पाएंगे क्या इसको? नहीं, मतलब नहीं, लेवल तान के 10,000 के हिसाब से हीलिंग देगा अगर ये। ऐसा हीलर लेके घुस रहा हूँ इसको। Ow! Where did that come from? I'm going in! Let's dance! ये चीज़ अपने को फ़ायदा दे सकती है, अभी देखते हैं। पर फायर अपना ख़त्म ही हो जाएगा पूरा। साठ 70 हज़ार की हेल्प लेके घुसना पड़ेगा क्या? इतना टफ क्यों पड़ रहा आप लोगों को समझ में? 35 लेवल वहाँ दिखा रहा है और वो 70 लेवल का आ रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, पर डैमेज तो जाए अपना। बूस्टर खत्म, अपन खत्म, मतलब मरने नहीं देगा अपने कैरेक्टर्स को। तो बाहर क्यों जा रहे अपन? ये भी काम नहीं किया तो फिर अपने को रेजर हटाना पड़ेगा, मोई लेके आना पड़ेगा। वही टिक सकती है अपने टाइम पे, शील्ड लगाएगी वो। अगर ऐसा प्लेयर नहीं होते भाई, नॉर्मल प्लेयर से खेलते अपने तो हालत ख़राब हो जाती। 68, 60, 60, 40, ये सीधे 2 लेवल डाउन है। एक चीची होती तो भी घुस के मारने में मजा आती है। It looked impressive enough. This is where all of Tibet's. Oh, so it's a trick. But even if we can, or better yet, take a nap. Oh, right. It's quiet. Huh? Look. Uh-oh. Quick, we have to go. You've already fulfilled your... Huh? Who's there? If you were Fatui, I imagine that you would be entitled to a generous reward from the Tsaritsa herself. But now, you're nothing but draw. Although, don't you think that trying to stop... So you've been planning... As one, she will get that which she... I'm not asking for your blessing, and there's nothing you can do to stop me anyway. The time for discussion, either way. The battle. When instead of confronting you when she faces a... But as for me... We won't let what happen... Oh, besides, you could never Fighting talk, बहुत पैसा है बाबा फतूई वालों के पास नहीं। This chance is hard. तो रोक अभी, तेरा चांस बाद में लेते रहेंगे। एक, दो, एक है, ये बाद में बढ़ाएंगे 261 का। 3, Come by, so show me all you've got. So very few ever get the chance to square off with a Fatui Harbinger. So come now, amuse me, and don't you dare disappoint. How unbecoming. Let's dance!
No rest for the... Cowering already? कितने तीर चलाएगा रुक भी जा As you wish, main Fräulein. Run all you like. Let the show begin! Not bad, not bad. A clear shot. So good to flee. Try this. क्या How unbecoming. अरे यार फिर कोई दिमाग मत खराब करो बिना फॉर्म भरे हमको मिलना ही नहीं है प्रोविजनल डिग्री कुछ भी बोल रहे हो लोग कॉलेज से ही नहीं देते रख दो ना लाइट बंद कर दो Ready, steady, go! teacher we are back Cowering already? Oz, reveal thyself! थोड़ा झटके दो आ गया बेटा तू तो पहले मर जाएगा You've made some progress. Not bad. You've got a trick or two. Haha, good. No wonder Senora was so wary of you. Well, that just means I can go all out. Brace yourself. This is about to get tough. Now, show me what you can do against the might of a Harbinger. क्या ही लाइक उतार रहे हैं All you do is run. I'll protect us! मुझे मर गए तो क्या होगा भाई ये चीटिंग है यार चल आ गया ये थिएटर में Fräulein. पूछे भी भाई इतना दूर भागने का आदत पड़ रही है You've got some skills. By royal decree.
some skills. You've got some skills. Oh no! Come on, we can do it! I'll protect us! Something else? तो वाटर लेना चाहिए था। No use hiding back there. I'll protect us! Ow! Why do they never miss? Something else catch your No eye? rest for the wicked. Midnight Phantasmagoria! No rest for the wicked. All you do is run. I feel Shit. a little weak. वाट लगने वाली है तो। 2 बार बस मेरे को हीरो मिल गया। ये मैंने मारा उसको। Not bad. Your swordsmanship is quite impressive. But that's about as far as you'll get. ये बाबा हमारी उसकी एबिलिटी। Didn't think you had that card hidden up your sleeve. You were just playing us to get close to the Exuvia! Oh, quiet down. Stop acting like some wide-eyed recruit. You've seen this world. You of all people should know. This should have been expected! Well then, I'll be taking Morax's Gnosis now. I see. Well, this is most unexpected. You beat me to it, didn't you? अब वाइट लगने वाली है। हीलर मर चुकी है, अब फटी गई लाइन में। ये वाला मिलता तो मजा आ जाती। Not bad. But this is going to cost you! Yeah! हील का टाइम चाहिए मेरे को। मेरी बारबरा खड़ी हो गई, मैं इसको तान दूंगा।
तो यही यूज कर रहा है, अगला क्ले मोड यूज करेगा। एक मिनट, कौन सा वाला था? यही है शायद, थोड़ा सा एचपी रिस्टोर करके देगा। ऐसी ट्यून बज रही है बाबा। मस्त ट्यून बज रही है बाबा बैकग्राउंड में। तो और क्या डिफरेंट? 165 लास्ट। You got to the Gnosis ahead of me, didn't you? Did you simply move faster? Or did you leak the information regarding the gold medal and make me take it from you? We didn't take it! अबे हरामखोर, रुकिए खबर है। दोनों से स्पेशल केस बचा के रखूँगा। Oz, reveal thyself. हार्ड है बहुत, ट्राई कर रहे हैं। Let the snow rubber go! ये गलती हो गई, माफ कर दो। Go rubber go! Go rubber go! छोड़ दो, कॉन्सुलेशन चाहिए बार बार बता दे। ये क्या निकालना है? अरे शर्म कर, सारी पावर उसी को दे दो। अरे भाग जाता है मेरे पावर के टाइम। होली है बीच खड़े होना था। चलो रेजर को खड़ा कर सकता हूँ अपने पास। By royal decree. Oh no! नहीं, हरकत नहीं, ये वाली हरकत नहीं, मर जाऊंगा मैं। Why has everyone stopped singing? मैं चाहते बार बार को जिंदा करना पड़ेगा। Everybody stand back! Oh no! अबे क्या चीटिंग है भाई? कौन पंगा ले रहा है? Phantasmagoria. By royal decree. Fräulein. क्या हिट आप पड़ रहा है ये गरीब अकेला बैलेंस 40 लेवल का कब तक टिक पाएगा? 40 सेकंड टिकना ही थोड़ी मर गया। अब तो मैं डबल डैमेज आएगा। थोड़ा सा Adventure time!
165 सेकंड अकेला बेनेट। Why do they never miss? पता गायब किधर हो गया, मेरे को क्या ग्लिच है? Couldn't break बस the curse. यार कसम से किल गई। दो मार दिए थे, तीसरे वाले पे चोट हो गई। अब चार्ज भी नहीं बचा, 18%। ऑफलाइन ही मारना पड़ेगा इसको, लग रहा है। मारेंगे ऑनलाइन ही मारेंगे इसको। रेजर को तो बहुत जल्दी मार रहा है, डिफेंस नहीं बच रहा क्या रेजर का? 826 का डिफेंस है यार। नोएल का है 952 का डिफेंस है। आर्टिफैक्ट इसमें कुछ नहीं करा है अभी आर्टिफैक्ट्स में। एचपी नहीं भाई, ऑनलाइन पेलना चलेगा। हाँ ऑनलाइन ही पेलूंगा, चलो मारने आऊँगा मैं, टेंशन नहीं। फ़ोन चार्ज भी लगाना पड़ेगा। एचपी, अटैक, डिफेंस, डिफेंस, डिफेंस। इसका डिफेंस लेके जाऊंगा, नोएल से ही काम हो पाएगा। वेपन क्या है? बैनेट, बारबरा ये है, और अपना फिशल। रेजर से बढ़िया फिशल का लग रहा है, क्योंकि दूर से मार भी रही है, लॉन्ग रेंज भी खेल सकते हैं, और शॉर्ट रेंज जाकर छोड़ देगी उसका जो ओजी है, वहाँ काम हो जाएगा अपना। ये भी 20 लेवल पे। मोरा बहुत चाहिए। मोरा मैंने पानी की तरफ बहा दी है, और अब मैं खेल भी नहीं सकता कोप में। बावन 1000 करके मोरा होंगे तो अभी अपने पास 52 यानी कि 2 20 100 में अपने पास होंगे 2.5 3। पहले लाइव फिल करता हूँ, फिर देखते हैं मोरा का। I can't wait any longer. की भी रख सकते हैं वैसे अगर चाहें तो, पर उसका बम ज़्यादा डैमेज देगा। वैसे क्ली रख सकते हैं, पर उसकी हेल्थ नहीं, फूक देंगे उसको। टीम सेटअप जमाना पड़ेगा, फिशियल रखना पड़ेगा, बार-बार ये दो तो कंपलसरी हो गए। Klee can help. फिशियल की जगह अपना As you wish. चार एलिमेंट में रेजिस्टेंस भी आएगा। क्ली का भी अटैक कितना है? Dodoko? 800 का अटैक है। Dodoko, where are you? Oh, ow! Where did that come from? 305 यहाँ से मिला है इसको। 167 वेपन का है। अरे वेपन भी तो ढंग का नहीं है इस पे ही।
ये 2 स्वॉर्ड हो गई मेरे पे, रिफाइन नहीं करा मैंने वैसे भी। तो लेवल 1 है, 39 अटैक है। आठ सौ 27 अटैक गया। चलो अब सीधा Benny's adventure team, assemble! Paytm 73. Or not. अबे गेम क्यों क्लोज हो गया? चलो दिखा दे थे कितना एक्सपी वेस्ट हो रहा है, ये नहीं दिखा दे थे। तो एक वापस कैसे मिल गया? मगर 3 लाख पड़ा अपने पे। 60 लेवल तक अगर वेपन को भी लेके जाते हैं अपन। बेनेट का अटैक कितना जाएगा? मार दिया? तूने मार दिया क्या? बढ़िया, मेरा तो मर ही नहीं रहा भाई। लास्ट में चोट हो रही है। मारूंगा तो मैं उसको आज ही। ये कम है, ओके। 70 भी लेके जाएंगे वेपन को। अब कितना अटैक पहुंचा इसका? 1057। बेनेट का तो काम हो गया। हेल्थ इसकी कम है। नहीं, लास्ट वाला भी चारों को फेल दिया। मेरा वाले में तो बचा नहीं भाई। क्या गंदा मार रहा, वो एक अटैक में उड़ा दे रहा। अपना इलेक्ट्रिक वाले तो मर जा रहे हैं अपना, कहने को बहुत गंदा मर रहे। फायर का ही सोच रहा हूँ ले आने का। बेनेट को तो मैंने कर दिया, कर रहा का लेवल नहीं है ना गरीब का। These bombs so heavy. मैंने फूंक दिया, बोला था। अरे फर्स्ट टाइम में शायद मेरे पास अभी बहुत अति डिफिकल्ट पड़ रहा है भाई। Benny's adventure team, एचपी किस पे अब देखना पड़ेगा। एचपी तो इसी पे ही है, 16 भी है वो। बाकी सारे तो अटैक ही लगाए। तलवार और कोई पकड़ ही नहीं सकता बेनेट के अलावा। ओहो, क्ली को अपन लेवल अप कर सकते हैं। इसमें क्या है? अटैक है, एचपी और अटैक दोनों है। अटैक वाला नहीं दूंगा भाई, दोनों ही अटैक चाहिए। इलेक्ट्रो डैमेज है, नॉर्मल अटैक है। लावा वो करे ना, ये तो रेजिस्टेंस वाले किस काम के।
रखे रहो। आर्टिफैक्ट्स की फार्म करने भाई बहुत कुछ करना है मेरे को एक साथ। एनहेंस के लिए तो कोई मतलब ही नहीं इनका। Bombs so heavy. चलो। These bombs so स्पाइरल हेवी स्पेल क्या आना पड़ेगा? हाँ? heavy. 134। बैनेट लेके देखते हैं अपन कितना परसेंट बचा। 13। फूक जाए आज फोन। बैनेट 40 लेवल का है। Gonna be epic. चलो कितनी बार पार्टी चेंज करनी पड़ेगी। This world is full of Windblade! चलो क्लेमर हटाओ। Get out of here! Out of the way! with the wind! तो अपन का इधर मतलब यहाँ पे अटैक परसेंटेज भी तो उसी का ही बढ़ेगा। I smell rabbit. Klee can help.
उसका, और एनर्जी है पर फिर भी यार काउंटर तो काउंटर होता है। चलते थे मर गए। Off we go. Boing, 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 boing. Teamwork is dreamwork. Yay, I did it! Oh, wait. No, I didn't. Off we go. Get out of here. Take cover. Why do they never miss? इसका डैमेज आजकल कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, मुझे पता नहीं क्या ही कर रही है। Off we go. अच्छा वो घास नहीं, वो तो नहीं मरता, चाइल्ड अपन ही मर जाते थे। एक 115 भर जाएगा, उसके बाद अपन पैसे वाले पे खेलेंगे जिसमें मोरा मिलता है। ये रहा। अभी के लिए करते हैं अपन स्ट्रीम बंद, मिलते हैं शाम को। वैसे शाम तो हो गई है, 6-7 बजे के आसपास, 7 साढ़े 7 के आसपास आता हूँ, या फिर पहले आ जाएंगे। मारना तो है चाइल्ड को।